What's up, guys? This is Ayush. Welcome back to our YouTube channel. And today we are going to start a new section, which is the Grab Back Podcast. And this is the Aerospacian Podcast. So it's 2021, just crazy as 2020, and we are entering in Space Race 2.0. 2020 is over, we made it, and we are continue moving forward, looking at this year, what it will unfold in aerospace industry. Let's start by talking about what is new. We are entering in a space race 2.0, and just like original space race, there is chaos. The things are not going well for us. हर जगह बवाल और भसड़ मची हुई है दोस्तों. Some of the good news we can say what happened in 2021. There is some really great stuff in space related, especially because this is our segment related to space industry. This month, the February, the way जो अभी चल रहा है, is all about Mars. Pretty much of the whole month is full of 3 different Mars missions actually making up to the Mars, जो कि हम आने वाले टाइम में बाकी पॉडकास्ट में जिनके ऊपर हम बात करेंगे. So let's discuss about our topic, which is Space Race 2.0. 2020 was a crazy year for all reasons. It been my observation that we have seen the same type of things. Space progress doesn't happen in the time when things were going well, and we potentially got time, money to make it happen. मतलब अगर आप 60s की स्पेस रेस से कंपैरिजन करके देखें तो उस समय भी सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही थी. हर कंट्रीज के खुद के कुछ बवाल चल रहे थे, हसल चल रही थी, और तब ही एक स्पेस प्रोग्रेस की सडन ग्रोथ हुई. एंड सेम अभी भी वही हुआ. जब से पैंडेमिक शुरू हुआ है उसके बाद से एक सडन इंक्रीज और रैपिड ग्रोथ देखी गई है स्पेस इंडस्ट्री में. सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू सी why the massive space progress usually tends to happen in the duration when world is under some trouble, and why it is like this. मेरे पास कोई इसका जवाब नहीं है और ना मैं उस जवाब के ऊपर अभी कुछ बात करना चाहूंगा. बट हाँ, अगर आप में से किसी को भी कोई भी व्यू अपना बताना हो कि आपको क्यों लगता है कि ऐसा रिलेशन स्पेस रेस 1 और स्पेस रेस 2.0 में क्यों बनता हुआ दिख रहा है, तो प्लीज आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो. एंड देयर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन, why we are spending so much money on a space program when we can use elsewhere. And that is an idea that come before me every time. हर कोई आके मेरे से पूछता है कि स्पेस मिशन के लिए बहुत ज्यादा हमें इन्वेस्टमेंट देनी होती है, और अभी जैसे हालात है हम वो पैसा वहां पे ना यूज करके कहीं और पे क्यों नहीं यूज कर सकते हैं. But I still believe, and this is still my answer, having a space program is somewhat allowing people to escape from the chaos of the world and hope for something new and better. But to literally get off this planet and the idea of creating new world or new life on another planet. And there is a lot to be excited for a space program. Definitely SpaceX is a big player here, and mano ya na mano, SpaceX is one of the reason कि लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है स्पेस इंडस्ट्री की तरफ. So in the coming time they are going to provide a lot of options, not only for the launches to the moon, but to create next step to the space economy and create a reliable way available to people, not only to launch human being to or from Earth, but to launch smaller missions on board. Private companies such as SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic were like, we are going to send people, like will be able to send people for tourism,
movie making and other stuff in the coming future. And this will be the great part of this Space Race 2.0. All this seems possible because of this combination of private and public funding. And talking about India particular, this combination is on its way into Indian space industry also. There is definitely a lot to be hopeful for, and we are going to see a lot of good things happening in space in coming to 2021. And one of the things we talked about why Space Race 2.0 that we go right now is kind of same that of 60s, but definitely there are big differences also. One of the biggest factor, or I can say one of the biggest difference is reusability. किसी ने भी ये कभी भी नहीं सोचा था एरोस्पेस इंडस्ट्री में कि reusability will be the part of our aerospace industry. SpaceX brought that idea and spends billions of dollars developing the technology to make that possible, and now using that thing with Starship to bring not only faster cycle for development, which is completely different from the traditional space progress, which was slow और बहुत ही हमेशा से स्पेस इंडस्ट्री में एरोस्पेस इंडस्ट्री में चीजें धीरे से होती हुई आई हैं. कोई फास्ट डेवलपमेंट या मैन्युफैक्चरिंग नहीं रही है. बट अगर अभी की बात करें तो रीयूजेबिलिटी की वजह से वो चीजें आसान हो गई हैं और एक ग्रोथ रेट बहुत सडनली इंक्रीज किया है. You can actually make things now faster without those of national budgets because प्राइवेट फंडिंग्स ही मिल रही हैं इतने अच्छी अमाउंट में हमें. और इसका ही रीजन है कि इंडिया स्पेसएक्स एक मिशन पे मोर देन 100 ऑफ सैटेलाइट्स भेज रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं. एंड दिस आइडिया ऑफ रीयूजेबिलिटी इज सीकिंग इनटू प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड. इंडिया ने भी अभी अपना नेक्स्ट डिके का पूरा चार्ट रिलीज किया है कि what are the things where they are going to focus, and reusable rocket technology is one of the top aim where ISRO is aiming right now. And reusable rocket technology was not something that was readily available or something which was considered even real thing to pursue, because such as NASA never found a point in it, because you're gonna lose amount of energy to put behind the object into the space because you're gonna use extra fuel to land. अगर आप भेज रहे हो रॉकेट को और आप चाहते हो कि वापस से वो लैंड कर जाए तो आपको थोड़ा बहुत फ्यूल उस पर और एक्स्ट्रा डालना ही पड़ेगा, जिसकी लोड की वजह से आप ऑलरेडी एनर्जी यूज कर रहे हो. और ये लॉस नासा बोलता था कि ये लॉस हमें हमेशा बियर करना पड़ेगा. देन व्हाई टू डू दिस? Why to take extra load during the launching? But SpaceX took time to do so. And one of the interesting thing is that it is easier to sell reused rocket because they are flight proven rockets. And that is which is something new. ये एक पॉइंट था जो शायद एलॉन मस्क ने बहुत ही अच्छी तरीके से बोला कि हम रीयूज तो कर ही रहे हैं, बट हमें रीयूज्ड रॉकेट्स और जो एरोस्पेस से रिलेटेड टेक्नोलॉजी और पार्ट्स है उनको बेचने में और उनसे प्रॉफिट कमाने में आसानी तब होगी अगर वो फ्लाइट प्रूवेंट हो. ऐसा कभी पहले नहीं होता था बिकॉज कोई भी कंपनी प्राइवेट फर्म अपना इतना ज्यादा बजट क्यों आपको देगी अगर आप पहली बार एक अपना लॉन्च करने जा रहे हो या कोई स्पेसक्राफ्ट आप पहली बार लॉन्च करने जा रहे हो. क्या चांसेस हैं कि वो सही तरीके से उड़ेगा या वो वहां पे अनसक्सेसफुल हो जाएगा. बट इफ वी आर यूजिंग रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी, वो ऑलरेडी एक बार उड़ चुका है, वो परफॉर्म कर चुका है एंड अब सेफ्टी है. दैट इज व्हाई द प्राइवेट सेक्टर इज शिफ्टिंग more
faster toward the space industry. And this is the space race 2.0. But the thing which really not discussed yet, I would like to talk about now is the number of flights and the test missions during this pandemic period. Whether we talked about SpaceX, Virgin Galactic or our own ISRO, बहुत ही ज्यादा नंबर्स हैं. मैं कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं बताने वाला हूं, आप खुद देख लीजिए कि SpaceX ने कितने मिशंस लॉन्च किए, इसरो ने कितने मिशंस लॉन्च किए. एंड ये सब हुआ स्पेशली इस पैंडेमिक के पीरियड में ही. शायद लोगों के पास टाइम, मनी और बाकी जगह से दिमाग हट चुका था एंड स्पेस इंडस्ट्री ने फिर से अपना पैर एक्सीलेटर पे रखा और एक बूम प्रोवाइड किया. नाउ वी आर इन न्यू एरा वेयर स्पेस इंडस्ट्री इज एक्सेप्टिंग यूज्ड रॉकेट्स because it's been flight proven and that someone as learning aerospace as a study, I see that it is a big change and progress. But this has pushed this industry, this aerospace industry, to think differently in a different way because जो पहली जनरेशन थी स्पेस प्रोग्रेस की, उसमें इसके बारे में कभी भी सोचा भी नहीं जाता था. एंड बिकॉज अ बिग चंक ऑफ थैंक्स गोज टू द SpaceX. एंड मेरे हिसाब से कि अभी जो ये ग्रोथ रेट है स्पेस इंडस्ट्री की, वो ऐसी ही बढ़ती जाएगी बिकॉज हमारे पास रीयूज्ड फ्लाइट प्रूवन रॉकेट एंड टेक्नोलॉजी अवेलेबल है. नेक्स्ट कमिंग मंथ्स या ईयर्स में हमें उन्हीं को यूज करके दोबारा मिशंस पे भेजना है और हम श्योर हैं कि हाँ वो पक्का रिजल्ट देने वाले हैं. बट द ओनली थिंग विच कैन क्रिएट प्रॉब्लम हियर इन दिस स्पेस रेस 2.0 is the funding issue. Because maybe हाँ private firms and government बजट्स सब मिला के फंडिंग हो रही है, बट कहीं ना कहीं शायद वो एक फैक्टर बने जिससे कि स्पेस रेस 2.0 थोड़ी सी स्लो पड़ सकती है. सो दीज आर माय थॉट्स. थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी एंड एज ऑलवेज प्लीज शेयर डाउन योर कमेंट्स एंड योर थॉट down below in the comment section and let me know what you think as an aerospace engineer and as a common person, what you think about the space and about this industry and how it is going. Be safe. That's it. See you soon. Have fun. Take care.